Hello friends, welcome to my educational channel GravityTech. In last videos, we have already covered static queue, static stack, singly linked list, doubly linked list, dynamic stack. In this video, we will cover dynamic implementation of a queue. Some of the things which will be covered in the upcoming videos are circular linked list, circular queue, reversing a linked list, pre-in post order traversals of trees, graphs, okay, incident graphs, incidence matrices. Okay, if you like the contents, please do like the video and subscribe to the channel to get updates about the new videos. Also share it with other students as well so that it will help them too. Now let's see what are we going to cover as a part of today's session. So what are the session objectives? We will quickly recap what is a queue. क्यू ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट जब स्टैटिक क्यू कवर किया था एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड इट फॉर एटलीस्ट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स कि क्यू क्या होता है, राइट? सो इफ यू वांट टू नो more details about the queue, go to the video and then watch that, right? We will have a quick recap, then we will have a practical implementation of dynamic queue of integers, and then we'll see what are the next session topics coming in the upcoming videos. Okay, now what is a queue? Queue is a linear data structure that follows a particular order in which the operations are performed. मतलब insertions और deletions जो operations होते हैं एक particular order में perform होते हैं, right? So let's say ये वाला हम लोगों ने example लिया था जहाँ पे एक one way road है और उस one way roads में जहाँ पे first car जो जाएगा वो first out होगा और जो last car आएगा वो last out होगा. Okay, so क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है वो पहले बाहर निकलता है और जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है वो लास्ट में बाहर निकलता है. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. सो सिंस यहाँ पे हमको दो एंड्स ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि नया एलिमेंट जब हम रखेंगे तो एंड में रखेंगे तो एंड का पॉइंटर हमारे पास एंड एलिमेंट होना चाहिए. सो ये वाला एलिमेंट जो होता है इसको रियर बोला जाता है और जब हम रिमूव करेंगे एलिमेंट तो हमको फर्स्ट एलिमेंट पता होना चाहिए क्योंकि दैट इज द एलिमेंट विच विल बी टेकिंग आउट. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट, दैट्स व्हाई वी से इट इज फ्रंट. फ्रंट करके एक पॉइंटर रहेगा जो फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, रियर करके एक पॉइंटर रहेगा जो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. और ये हर एक को आप एज्यूम कर सकते हो कि नोड्स है. ओके, दीज आर एक्चुअली द नोड्स, राइट? सी, सो दिस इज अ क्यू. जो सबसे पहले जो इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा, करेक्ट? सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो दिस इज अ फीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, राइट? नाउ व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन द क्यू? एनक्यू. एनक्यू मतलब क्या कि क्यू में इंसर्ट करो एलिमेंट. इंसर्ट कहां पे करेंगे? एट द लास्ट. एट द लास्ट यूजिंग विच पॉइंटर? रियर पॉइंटर. डीक्यू. डीक्यू मतलब क्या? क्यू में से एलिमेंट रिमूव करो. टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. वो कैसे रिमूव करेंगे? यूजिंग द रियर फ्रंट पॉइंटर. फ्रंट से रिमूव होगा. Peak, right? Peak will basically return the front element of the queue. Then is full. is full की जरूरत यहाँ पे नहीं है. क्यों? क्योंकि डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन में is full की जरूरत नहीं होती. जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होता है हम हीप में जाके नया एलिमेंट के लिए जगह अलोकेट करते हैं एंड देन वी यूज दैट एलिमेंट इनटू द dynamic stack. So dynamic stack में is full is not required. This is something is required in the static stack. Is empty ये रिक्वायर्ड होता है बिकॉज अंडर फ्लो कंडीशन. अगर आप रिमूव करना चाहते हो एलिमेंट और रिमूव करते वक्त अगर वो क्यू एम्प्टी है तो आप रिमूव कर पाओगे क्या? नहीं, करेक्ट? सो इज एम्प्टी इज द function which will basically return true if the queue is empty, else false. Now size will basically tell you what is a size of the queue. Now let's look at the practical example of queue of integers, a dynamic implementation using the linked list. Let me bring the IDE. Yeah, so this is IDE. Let's try to maybe write a queue function, right? So सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे. So this will be a dynamic queue of integers. What it will need? Variables हमको क्या क्या लगेंगे?
वेरिएबल्स हमको पहले तो नोड लगेगा, सो दैट इज व्हाट स्ट्रक्ट नोड। करेक्ट, स्ट्रक्चर लगेगा जिसमें इंटीजर डेटा रहेगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। करेक्ट। फिर क्यू में हमारे पास एक फ्रंट पॉइंटर लगता है। करेक्ट, वी नीड अ फ्रंट पॉइंटर। वी आल्सो नीड अ रियर पॉइंटर। करेक्ट, जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट करके इंटीजर भी होना चाहिए। करेक्ट, ये वाली चीजें हो गई वेरिएबल्स के तौर पे। ना फंक्शंस हम कौन कौन से यूज करेंगे, राइट। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं क्यू पे। वेरी फर्स्ट होता है मतलब इंसर्ट करो, इंसर्ट को हम बोलते हैं इनक्यू। करेक्ट, इनक्यू। देन डीक्यू मतलब क्या, क्यू में से रिमूव करो। फिर चेक करो कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। फिर चेक करो कि उसका सबसे ऊपर का एलिमेंट कौन सा है, पिक एलिमेंट। करेक्ट, देन वी आल्सो लुक एट कि सर्च करो, सर्च सम एलिमेंट, राइट, in a queue. Then we might also be interested in knowing the size of the queue, right? And then something, right, you will need like display the queue. Correct, like this. अभी ये सब कुछ हम फंक्शन से एक करके डिफाइन करेंगे। करेक्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेनू फंक्शन। जो हम बिफोर मेनू वी नीड अ प्री प्रोसेसर सेक्शन। करेक्ट, सो हैश इंक्लूड stdio.h printf वगैरह के लिए, राइट, stdlib.h for the exit. Now let's have a struct node. इसमें रहेगा data and then pointer to the next node. Correct. हम इसको टाइप डेप कर देते हैं so that हम उसका alias यूज कर सके। struct node, इसको कर देंगे node। तो जहां जहां पे अगर struct node यूज कर रहे हैं उस जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, node, राइट। तो चलो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है। लेट मे बी गिव द मेनू नाउ, राइट। अभी मेनू मतलब ऐसा फंक्शन जो यूजर को हम ऑप्शंस देंगे कि यूजर चॉइस करेगा क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है। करेक्ट, सो अगर आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स नहीं देखे तो आप पिछले वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस वी आर फॉलोइंग। वी विल यूज द डू व्हाइल लूप एंड देन वी विल रिटर्न द चॉइस। ये चॉइस हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, नाउ दिस चॉइस विल बेसिकली वी विल एक्सेप्ट फ्रॉम द user. The choice can be like insert, delete, search, know the size, pick, display, and then maybe the exit as well, right? Let's see. Let's try to write that choice. Correct. So very first we will give a printf. We will give a menu. Correct. What will be the menu? So dynamic queue menu. Dynamic queue menu. Right. Now this is going to be the menu which user will be able to see. Printf. Now first this should be tab first enqueue. enqueue का मतलब होता है insert element in the queue. करेक्ट। फिर सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा dq, मतलब क्या, डिलीट करो। लेकिन मुझे यहाँ पे दो न्यू लाइन नहीं चाहिए, एक ही न्यू लाइन चाहिए, राइट। dq from the element from the queue, so delete. Correct. Now what will be the third option? थर्ड ऑप्शन लेट्स से सर्च, कि एग्जिस्टिंग क्यू ऑलरेडी है उसमें सर्च करो, सर्च एन एलिमेंट, राइट। नाउ what will be the fourth option? Fourth option would be, let's say, knowing the size of the queue. Correct. Then what will be the fifth option? Fifth would be, let's say, knowing the peak of the
Enqueue means insert in the queue, right? Dequeue means remove from the queue, right? Search in queue. Okay. Now, what will be the sixth one? Sixth operation would be display, right? Now, once this is done, we will also have the zero option, which will basically be for coming out of the program. So exit. Exit means zero. Now we will ask user to enter the correct choice out of this. जो ये choice है, right? Enter the choice. Now enter the choice क्या होगा? This will basically 0 to 6. See, यहाँ पे 0 to 6 इनमें से कोई भी यूजर चूज कर सकता है ऑपरेशन क्या करना है क्यू पे. Now scan app. Person D, whatever the operation is, right, that will basically be stored into the choice. Abhi, you need to make sure that the choice is correct, right? So if choice is less than 0 or choice is greater than 6, अगर 0 से कम है और या फिर 6 से बड़ा है, मतलब इनकरेक्ट चॉइस है. चीजें क्या 0 और 6 के बीच में ही होनी चाहिए. सो दैट मींस printf error, right? Incorrect choice. Enter the correct choice, right? But अगर इंटर द करेक्ट चॉइस को देना है, वी नीड टू बेसिकली चेक दिस कंडीशन इन वाइल डू वाइल एज वेल, ताकि वो तब तक लूप में घूमता रहे जब तक यूजर करेक्ट चॉइस देता नहीं है. सो दिस इज अ मेनू फंक्शन, राइट? ये हो गया मेनू फंक्शन. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द मेन फंक्शन. ओके, नाउ इंट मेन, व्हाट आर वी गोइंग टू नीड? मेन रिटर्न करेगा 0, करेक्ट? You know, we write more, right? And there is a while loop we use, ताकि यूजर को जब तक ये ऑपरेशंस करने, राइट, तब तक वो ऑपरेशंस करता रहे. वी गिव अ स्विच एंड देन मेनू. ये पूरा मैंने डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जो पहले मैंने 4-5 वीडियोस रखे हुए हैं. सो जस्ट मे बी गो थ्रू दोस वीडियोस to know what exactly the programming style I'm using here. Okay, then we will give user a prompt, right? Do you want to perform more operations, right? 0 for no and 1 for yes, correct? So the user will basically enter %d and then that choice will go into the more. If the user selects non-zero element, it will go in the while loop and then this will be continued as well. Once this, जब यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, फिर से वो यूजर को पूछेगा, भाई आप डू यू वांट टू स्टिल परफॉर्म मोर ऑपरेशंस ऑन द एग्जिस्टिंग क्यू? अगर उसने जब तक 0 नहीं इंटर करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा. अब यहाँ पे स्विच और मेनू है, इसका मतलब मेनू फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इस वाले फंक्शन से यूजर कुछ ना कुछ चॉइस इंटर करेगा, वो वाला चॉइस रिटर्न होगा यहाँ से 0 to 6 के बीच में. तो जैसे ही स्विच केस में 0 to 6 आ गया, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? केस होनी चाहिए, राइट? केस 1 और ऐसे 7 केसेस होंगे, करेक्ट? 0 to 6, 5, 6, 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the last one is 0. And for the last one we don't need the break, correct? Because it's the last one. Okay, now the 0 is the easiest one, we know. It says simply exit, correct? Now let's look at what is the first. If you look at here, first option, right? First is what? A push, right? Now let's see how we can basically do the push operation. So push operation जो enqueue operation है, see insert कहाँ पे होगा एलिमेंट? क्यू में एंड में होगा. So end मतलब क्या? rear pointer is what we need here, correct? So let's now maybe
try this, right? So yeah, printf. See, now before that, what you need, we'll complete this afterwards, but before that you need some things, right? See, node star, आपको लिंक लिस्ट का फ्रंट मालूम होना चाहिए. सो अभी के लिए फ्रंट कोई कुछ नहीं है, लेकिन इट्स नल. नोड स्टार, आपके पास रियर भी होना चाहिए. अभी तो लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, सॉरी क्यू में कुछ नहीं है, तो रियर भी नल रहेगा. जो नया एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे वो क्या रहेगा? न्यू एलिमेंट, राइट? सो दिस इज द एलिमेंट मे बी वी विल आस्क यूजर टू इंटर. सो यूजर को एक प्रॉम्प्ट जाएगा, सिंस इट इज इंसर्ट, राइट? इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इनटू क्यू. क्यू में जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो इंटर करो. तो यूजर जैसे इंटर करता है एलिमेंट, राइट, दैट एलिमेंट विल गो इनटू द एलिमेंट करके जो अपना वेरिएबल है इसमें चला जाएगा. करेक्ट. एंड देन वी विल कॉल अ फंक्शन क्यू, नॉट क्यू, इट शुड बी व्हाट? एनक्यू. मतलब क्या? क्यू में इंसर्ट करो. नाउ एनक्यू, राइट, it would be like a address of front, right, address of rear, and then the integer. Now why do we need a front as well here, right? हमको insert तो rear में करना एंड में, तो फ्रंट की क्या जरूरत है? देखिए, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इंटर कर रहे हो तो आपको फ्रंट भी चेंज करना पड़ेगा, रियर भी चेंज करना पड़ेगा. जब आपके क्यू में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपको फ्रंट और रियर नए नोड को चेंज करने पड़ेंगे, right? So that's what it is. Now let's try to write this function. Okay, now this function will basically return nothing. So इसका return type है void. ये हो गया address of front है, तो ये node star star front, because it's a pointer to pointer. This will be again node star star rear, rear node को point करेंगे. This is the int element जो actually data रहेगा. अभी हमको कहाँ पे इंसर्ट करना है? रियर में. सो लेट्स हैव दिस एज अ टेम्प में हमने स्टोर कर लिया रियर. करेक्ट. नाउ हमें नया एलिमेंट लिंक लिस्ट में रखना है, सॉरी क्यू में ऐड करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी नीड टू क्रिएट अ नोड फर्स्ट. जो एलिमेंट हम रखेंगे, राइट? नोड कैसे एलोकेट करोगे आप? सो मेमोरी टू बी एलोकेटेड. नया नोड जब भी इंसर्ट करेंगे उसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है. So malloc is a function which will basically help you in that. Correct. So new node malloc size of what? Basically node. इतने साइज की मेमोरी एलोकेट करो. लेकिन malloc जब रिटर्न करेगा, malloc रिटर्न करेगा void star. तो उसको टाइप कास्ट करना है ताकि वो मेमोरी जो लोकेशन है वो नोड स्टार में कन्वर्ट हो जाए, राइट? टाइप कास्ट हो जाए. नाउ न्यू नोड का जो डेटा है, राइट, न्यू नोड का जो डेटा है दैट शुड बी व्हाट? एलिमेंट. न्यू नोड के अंदर हमने एलिमेंट रख दिया. अभी न्यू नोड का जो नेक्स्ट रहेगा, टू बी ऑन सेफ साइड, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है नल कर देंगे. करेक्ट. सो अभी यहाँ पे एक नया नोड तैयार हो गया. सो इट विल बेसिकली क्रिएट अ न्यू नोड, राइट, एंड विद द एलिमेंट, लेट्स से नाउ दिस वे, राइट? सो इफ दिस विल बी अ न्यू नोड, एक मेमोरी एलोकेट होगा, इसके अंदर ये रहेगा डेटा. अगर आपने एलिमेंट यहाँ पे लेट्स से 11 रखा, सो दिस विल हैव 11, और एक पॉइंटर हो जाएगा जो अभी नल है. करेक्ट. दिस इज हाउ. अभी आपको जब इसको इंसर्ट करना है तो हो सकता है फ्रंट और रियर दोनों नल हो, तो फ्रंट और रियर दोनों किसको पॉइंट करने चाहिए? इसको पॉइंट करने चाहिए. करेक्ट. दैट्स हाउ. अगर नल है तो, राइट, दोनों के दोनों, मतलब एम्प्टी है, क्यू क्यू में कुछ भी नहीं है अभी. करेक्ट. अगर क्यू में ऑलरेडी चीजें है, लेट्स से दिस इज अ क्यू ऑलरेडी, राइट, ये क्यू है, क्यू में ऑलरेडी कुछ नोड्स है. करेक्ट. दिस इज द वे न्यू कोड है, नोड से, और एक नया नोड है, तो आपको क्या करना है? इस नोड को यहाँ पे पॉइंट कर देना है. करेक्ट. मतलब क्या कि जो रियर है, दिस इज व्हाट? अ रियर. रियर का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड हो जाएगा,
और जैसे रियर का नेक्स्ट न्यू नोड हो जाएगा, लिंक बना ली, तो आप इसको रियर बना दो बाद में, रियर इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नोड, राइट, इजी। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दैट। तो सबसे पहले क्या, अगर क्यू एम्प्टी है, वो क्यू एम्प्टी का कंडीशन क्या है, अगर फ्रंट भी नल है एंड रियर भी क्या है, नल है, तो अभी रियर का जो स्पेलिंग है हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया, तो जस्ट चेंज दैट, करेक्ट। तो स्टार फ्रंट, फ्रंट भी और रियर भी क्या हो जाएगा, न्यू नोड, एंड दैट्स डन। लेकिन अगर, लेकिन अगर ये वाला जो है क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, स्टार रियर का जो नेक्स्ट है, दिस विल बेसिकली बी व्हाट, न्यू नोड, करेक्ट। और स्टार रियर अभी कहां पे पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा, मतलब ये एंड में हम लोगों ने ऐड कर दिया, एंड दैट्स डन, दैट वाज अ एनक्यू फंक्शन। ये हो गया एनक्यू फंक्शन, राइट। उसके बाद है डीक्यू सर्च साइज पिक डिस्प्ले, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमको वो वाला फंक्शन हर बार देखना ना पड़े, राइट। डीक्यू साइज पिक, व्हाट एल्स, राइट, नो ये सर्च था, दिस इज सर्च, दिस इज साइज, दिस इज पिक, एंड दिस विल बी अ डिस्प्ले। चलो अब वन बाय वन एक्चुअली वी विल जस्ट मे बी implement it, okay। Now let's try to implement the dequeue। dequeue function मतलब क्या कि रिमूव करना है, करेक्ट। सो वी विल मे बी कॉल अ फंक्शन dequeue। हमको रिमूव कहां से करना है, एंड में से, लेकिन हो सकता है कि क्यू में ओनली वन एलिमेंट है, अगर क्यू में ओनली वन एलिमेंट है, सॉरी हमको रिमूव करना है फ्रंट में से, हो सकता है क्यू में ओनली वन एलिमेंट है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हो, अगर वैसी चीज है, राइट, एट दैट टाइम वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों के दोनों नल है, करेक्ट, डैंगलिंग पॉइंटर नहीं हो रहा है उस तरीके से, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस फंक्शन, ओके। नाउ लेट मी मे बी, इसको भी मैं ये कर देता हूँ, राइट, दिस वे। सो दिस इज अ फंक्शन which will again return nothing, void, correct. Since this is the address of operator, this will be pointer to pointer, and then this will also be a pointer to pointer, correct। now हमको रिमूव करना है, रिमूव कर, जो नोड हम रिमूव करेंगे उसको स्टोर करने के लिए हमको कुछ तो लगेगा, सो रिमूव्ड नोड, करेक्ट। हम, हमें कौन सा नोड रिमूव करना है, फ्रंट रिमूव करना है, करेक्ट। सो हमने उसको फ्रंट को वहां पे स्टोर कर दिया। अगर, अगर फ्रंट ही नल है, करेक्ट, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, तो मतलब क्या, क्यू एम्प्टी है, राइट, क्यू क्या है, एम्प्टी, तो वी रियली कैनॉट remove the element, right, so and element cannot be removed, right, so this is when it is empty। लेकिन अगर q empty नहीं है तो इसका मतलब हम फ्रंट में से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सो अगर फ्रंट में से हमको एलिमेंट को रिमूव करना है, सो हाउ इट विल बी, सी, सो सी दिस इज योर लिंक लिस्ट, दैट मीन्स क्यू, डायनेमिक क्यू, ओके, इस तरीके से है। अभी फ्रंट इज दिस इज फ्रंट, राइट, एंड दिस इज रियर, ये रियर को पॉइंट कर रहा है। अभी जब रिमूव करना है तो हमको रिमूव करना है ये एलिमेंट, करेक्ट। इस एलिमेंट को हम लोगों ने रिमूव नोड में ले लिया है, इसको, ये इसको पॉइंट कर रहा है। नाउ ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब हम, ये हमको फ्रंट क्या हो जाएगा, चेंज होना चाहिए, फ्रंट क्या हो जाना चाहिए, ये। सो इसलिए फ्रंट इज इक्वल टू व्हाट, फ्रंट नेक्स्ट, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। और अभी फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको, ये रिमूव नोड है, लेकिन रिमूव नोड का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नल, ताकि ये एलिमेंट सेपरेट हो जाए और अभी
जो क्यू बचेगा ए क्यू रहेगा, ये फ्रंट रहेगा, ए रियर रहेगा। करेक्ट। और फिर जैसे ही इसको नल कर दिया हम इसको फ्री कर देंगे यूजिंग द फ्री फंक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट, राइट? सो स्टार फ्रंट इज इक्वल टू स्टार फ्रंट नेक्स्ट, करेक्ट, एंड इट विल बेसिकली बी व्हाट, रिमूव्ड नोड का जो नेक्स्ट है वो हमको क्या करना है, नल, जो जैसे मैंने अभी बताया। करेक्ट। एंड वंस यू डू दैट, before freeing that complete memory, right, you need to just maybe display what you did, right? You removed the element, which element, percent %d, and then removed, let me just copy it, right, maybe instead of typing always. So removed and then data, correct. ये वाला एलिमेंट हम लोगों ने रिमूव किया है जो फ्रंट में था, बट यू नीड टू फ्री एज वेल। जो नोड हम लोगों ने रिमूव किया है उसको फ्री भी करना है, सो फ्री रिमूव नोड, करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि आपके क्यू में एक ही एलिमेंट है। क्या है? एक ही एलिमेंट है, मतलब दिस इज ऑल्सो फ्रंट, दिस इज फ्रंट, एज वेल एज दिस इज रियर भी है, और इसी को हम रिमूव भी कर रहे हैं। करेक्ट, ये हो गया रिमूव नोड। तो अभी क्या होगा फिर, अगर हम लोगों ने इसको रिमूव करना है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएंगे, नल, करेक्ट। सो दैट्स थिंग वी नीड टू टेक केयर। अगर इफ फ्रंट अगर नल हो गया तो रियर भी क्या कर दो, नल, so that rear is not pointing to the memory which does not exist, right? So ये हो गया dequeue function। अभी once we are done with the dequeue, remove function, the next one is what, search। मतलब हमें सर्च करना है कुछ तो एलिमेंट, so we will basically give user what user want to search, correct? So very first thing we should basically check ये empty है या नहीं, right? is empty। अगर क्यू empty है तो आप सर्च कर पाओगे नहीं, राइट? सो वी शुड बेसिकली जस्ट से क्यू इज एम्प्टी एंड सर्च इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। लेकिन यस, सो वी नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन, इज इट? So let's try to define the function here. It will return boolean, right? And then it is kind of node, right? Node star. Return if front is equal to null। अगर front null है तो true return करो, करेक्ट। सो दैट्स द फंक्शन। लेकिन अगर null नहीं है तो क्या है, राइट? सो वी शुड बेसिकली आस्क यूजर व्हाट यू वांट टू सर्च फॉर, करेक्ट। इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। सो एलिमेंट इंटर करो, क्या आपको सर्च क्या करना है। सो जैसे एलिमेंट इंटर करेगा वी नीड टू बेसिकली स्टोर दैट एलिमेंट समवेयर, राइट, इन एन इंटीजर। सो एलिमेंट जो हम लोग ने लिया हुआ है वही यूज करते हैं हम लोग। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिकली we will use a printf function, right? So printf, let's say %d element found in queue at position, so it will return some position, right, at position %d। basically search, is it the correct way, right? what if the अगर एलिमेंट नहीं मिला तो, right, then maybe we should basically have here another integer, let's say found index, correct।
Now this found index will be a kind of return value of search. Correct. So found index is equal to search. सर्च करने के लिए हमको चाहिए front. Do we need a rear? We don't need the rear, maybe, right? Yes, we don't need the rear. And then the element, right? जो element search करना चाहते हैं हम लोग. अगर found index is equal to 0 है, इसका मतलब क्या कि क्यू में वो एलिमेंट मिला ही नहीं, राइट? परसेंट डी एलिमेंट does not is not present into queue. Correct? That is the element. But what if it is present? Correct? Then we should basically have the else part, which will tell yes, the element is present, and element is present at found index, right? But there are 2% D's, so there should be two variables here. So first is element and then another is found index. Now the next work is what? To define this function. Correct? अभी इसको इस function को define करते हैं. Let's try to define this function. It will return the integer. Correct? कि जो भी position कौन सा है, right? Now this is going to be what? Node star, क्योंकि star की जरूरत है नहीं. अगर star की जरूरत है नहीं, then we should basically have it here only a front. Correct? Now सर्च करना मतलब कि हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और पोजीशन हमको देना है. So let's have a pointer which we will use to traverse through the queue, and then int position, which will basically return the position of the found element. Correct? So while जब तक temp null नहीं आता है तब तक पूरा लिंक लिस्ट क्या करो? ट्रैवर्स करो. When you reverse traverse, right, अगर आपको temp का डेटा मिल गया, मतलब द एलिमेंट, राइट, अगर मिल गया तो क्या करो? सो पोजीशन को आपको यहीं पे प्लस प्लस करना है, क्योंकि पोजीशन आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा, राइट? सो अगर मिल गया तो ब्रेक. करेक्ट? एंड देन अगर नहीं मिला तो टेम्प इज इक्वल टू व्हाट? टेम्प नेक्स्ट. करेक्ट? सो एंड देन रिटर्न पोजीशन. अभी इसमें प्रॉब्लम ये एक है. लेट्स मे बी ट्राई टू run this code just as a quickly by hand, right? Let's say ये वाला आपके पास क्यू है 78 89. ओके, और आपको सर्च करना है एलिमेंट 78. करेक्ट? सो अगर आपको रन करना चेक करना है 78, सो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पोजीशन क्या रहेगा? 0. करेक्ट? सो 78 इज इक्वल टू 34. यहाँ पे आएगा नहीं, तो आगे जाएगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. अभी टेम्प हो गया 56. अगेन पोजीशन विल बिकम 1, सॉरी पोजीशन विल बिकम 2 नाउ, राइट? पोजीशन 2 हो जाएगी. टेम्प का डेटा और एलिमेंट सेम है क्या? 56 और 78 नहीं, और आगे चला जाएगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट. अभी टेम्प नेक्स्ट 78. पोजीशन हो गया 3. इज 78 इज इक्वल टू 78? यस. सो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. अभी पोजीशन क्या है? 3, और यहाँ से 3 रिटर्न कर देगा. लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है. लेट्स से 79 देख रहे हो, तो यहाँ तक आएगा, राइट? उसको फिर से मिलेगा नहीं. तो जब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट होगा, यहाँ पे तो पोजीशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बट इट विल स्टिल रिटर्न द पोजीशन 4. इसका मतलब क्या? You should basically have, if temp is not equal to null, अगर temp null नहीं है तो पोजीशन क्या रिटर्न करो? 0. पोजीशन को 0 बना दो. सॉरी, पोजीशन अगर temp null हो गया, राइट, अगर temp null है तो पोजीशन क्या कर दो? 0 कर दो. मतलब पूरी की पूरी क्यू हम लोगों ने ट्रैवर्स कर ली, लेकिन हमको वो एलिमेंट मिला नहीं.
एट द एंड तक। तो जैसे अगर 0 रिटर्न करेगा तो 0 मतलब नहीं है, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। सो ये हो गया सर्च। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द साइज, करेक्ट। सो printf size of q is equal to what, परसेंट d। और फिर उसके लिए हमको एक फंक्शन लिखना है साइज ऑफ q, जहां पे हम ओनली फ्रंट देंगे, करेक्ट, फ्रंट से हमको साइज मिल जाएगा। सो हाउ टू राइट दिस फंक्शन, लेट्स ट्राई टू राइट द फंक्शन। सो ये रिटर्न करेगा इंटीजर साइज ऑफ, करेक्ट, and this front will be what, node star। Now int length is equal to 0, we need a temporary pointer for the traversing, क्योंकि फ्रंट को चेंज नहीं कर सकते, फ्रंट अगर चेंज कर दिया तो पूरी क्यू लॉस हो जाएगी, राइट, वी लूज द कंप्लीट क्यू। सो जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल आता है, जब तक टेम्प इज इक्वल टू नॉट नल, राइट, सो लेन को क्या करो, प्लस प्लस, एंड टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प इज इक्वल टू व्हाट, टेम्प नेक्स्ट, करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब तक टेम्प नल नहीं आता तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी क्यू। अगर एम्प्टी है मतलब फ्रंट नल है, अगर टेम्प इज इक्वल टू नल, वो ये वाला कंडीशन यही फॉल्स हो जाएगा, तो लेंथ जो है रिटर्न, ए रिटर्न करेगा 0, करेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर 23 है तो टेम्प क्या है, 23 नल है क्या, नहीं, लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेंथ हो गया 1, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट है क्या, कुछ नहीं, नल, तो अभी नल आ गया, मतलब ये रिटर्न करेगा 1। नाउ लेट्स हैव 67 एंड 89, 3 एलिमेंट्स, राइट। सो टेम्प पहले यहाँ पे पॉइंट करेगा, नल नहीं है, लेंथ 1 हो गया, टेम्प चला गया आगे, लेंथ, टेम्प नल नहीं है, लेंथ हो गया 2, टेम्प आगे चला गया, फिर से लेंथ हो गया 3, टेम्प आगे चला गया, इसके आगे कुछ नहीं है, नल, ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है, वो रिटर्न कर देगा एक्चुअल लेंथ, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द साइज इज। व्हाट इज द नेक्स्ट, रिटर्न द पिक, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोग को ये चेक करना है कि ये एम्प्टी है या नहीं, राइट। सो इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो मतलब क्या कि क्यू में से हम पिक एलिमेंट दे नहीं सकते, करेक्ट, क्यू इज एम्प्टी, सो नो pick element, right, which will be removed first। but अगर वो नहीं है then we will basically display, right, pick element of q is equal to what, percent d, and then what it is going to pick, let's say front, okay। Now this is what the function is. Now we need to define the pick function, correct. So the function would be, let's try to define the function here, right. So it will return int, this will be what, node star front, and then it will simply return front data, nothing else, right। ये हो गया pick function। Now what we want, the last option would be like to display the queue। Let's try to display the queue now। The very first thing we would check, अगर queue empty है क्या, अगर empty है तो display करने का कुछ फायदा है क्या, नहीं, correct। So let's see if it is empty। अगर empty है तो printf queue is empty, no element to display, right। but अगर वो empty नहीं है तो let's maybe define a display queue function, right। So display queue function would be what, basically to display we need a front only, correct। So हमको front ही चाहिए, front से हम पूरा traverse करेंगे end तक। So let's just use this way, right। जैसे हमने length वाला function
राइट किया हुआ है साइज वाला, सेम राइट करना है, ओनली ये रिटर्न करेगा void, करेक्ट, ये void रिटर्न करेगा, and then let me just scroll down. So this will be what? Node star, correct? Now you need a temporary pointer to traverse. Temp is equal to what? Front. Now while temp is not equal to null, just display it, right? Printf %d, and what is that? Temp data. But you also need to traverse the temp, right? So temp should go to the next once it is printed. अगर डेटा प्रिंट कर दिया करंट का तो नेक्स्ट हो जाना चाहिए, करेक्ट, एंड दैट्स ऑल इट इज. लेकिन हम लोगों को उसको एक अच्छा सा मैसेज भी देना है यूजर को, सो लेट्स मे बी ट्राई टू गिव अ मैसेज, राइट, क्यू एलिमेंट्स आर, करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो ये हो गया डिस्प्ले. नाउ वी आर डन विद द कोडिंग, राइट. सो इट इज 245 लाइंस ऑफ कोड. सी गाइज, अभी हम इसको रन करेंगे. रन करते वक्त हो सकता है कुछ टाइपो मिस्टेक्स हो जो भी हम रिजॉल्व करेंगे, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट, विल गेट इट रन. सो व्हेन आई रन इट आई गेट दिस एरर, राइट. क्या एरर है? रिमूव नोड, और रिमूव नोड का स्पेलिंग गलत है, करेक्ट. नेक्स्ट. oh there was only one error, see. so you got a queue, अभी you got a menu. तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं queue is empty, correct. Let's try to find out the peak of the element. Peak element. Queue is empty, so no peak element, right? Let's try to find out the size. So 4. Size of the queue is 0. Let's try to find out the search. Search भी करके देखते हैं क्योंकि empty है, right? So 3. Queue is empty, search is not possible, right? Delete भी करके देखते हैं. Queue is empty, so cannot be removed. अभी इसमें हम insert करेंगे. Let's try to insert the 23 and now display it. See, 23 is there. Let's try to insert the more elements, right? So 34, display one more element. Let's try to insert 67, right? Display, and this is how it is, right? Let's try to search the element, right? So if we search the element 34, it will tell 34 is found at the position 2, correct. Now let's try to find out remove the element. When you maybe remove the element, right, so it will say removed element is 23. That was the first element which was there, right? Now when you display it, it will say 34 and 67. Yeah. So let's perform more operations, right? Let's try to maybe delete again, right? 34 is deleted because that was the first element, right? Now if you try to display it, right, that is 67. Let's try to insert the more elements. 55. Let's try to insert the more elements. 66. Let's try to insert the more elements. 78, right? Now when you display it, right, you will basically have the 4 elements inside it, right? Okay. Now let's try to see what is the size of that, right? So if you say 4, size of this is 4, right? What is the peak? Peak of this 67. So when you try the peak, right, it will say 67. Let's now try to search 67, right? So if you maybe search 67, the third option, it will say 67 is found at the position 1. Let's try to display it. 6. Is it 67 is at first? Yes. Now let's try to search some element which is not already here. 79 search करके देखते हैं, right? So third and 79. See, 79 element is not present into the queue, correct? Now let's try to remove all the elements. Removed, removed, removed next element, removed next element, removed next element, and there is nothing to remove because queue is empty. Okay. So this is how you basically can implement a dynamic queue, okay, using a linked list. Now let's go to the presentation what we have. Okay. Yeah. So we saw the practical example, queue of integers, dynamic implementation using the linked lists. Now this is what actually I had it from this video.
The next video will have the circular queue of integers, that is a dynamic implementation again. Okay guys, if you need to know how the what kind of programming style I'm following, go through all the previous 4 or 5 videos. You will come to know, you will get the more knowledge about what are the data structures using C, and that will basically help you to understand the next upcoming videos. Okay. So friends, if you like the contents of the video, right, do click on the like button of the video, subscribe to the channel to get updates about the new videos, and share it with other students as well so that they will also get benefit of this, right? So please do not forget to like, subscribe and share. Many more things are to come. I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.